Hi everyone, welcome to our channel Dentistry to the Point. Now as we are moving on to the odontogenic cyst, the next cyst for our discussion is calcifying epithelial odontogenic cyst. What it is calcifying epithelial odontogenic cyst. इसके दो और नाम भी है, इसको अपन गॉर्लिन सिस्ट भी कह सकते हैं और सिस्टिक केराटिनाइजिंग ट्यूमर, मतलब इसके नाम से आप एनालाइज कर सकते हैं कि इट इज अ सिस्ट विद केराटिनाइजिंग and a power of tumor. मतलब it is not only a cyst but it also shows some clinicopathologic or behavioral signs like a tumor. So firstly we'll see कि इसका tissue of origin क्या है. तो इसका tissue of origin क्या रहेगा? It is derived from odontogenic epithelial remnants. कहाँ से derive हुआ है? It is derived from the odontogenic epithelial remnants. तो अब ये जो odontogenic epithelial remnants रहेंगे वो कहाँ से किसको रिजेंबल करेंगे? अपने एमिलोब्लास्टोमा को रिजेंबल करेंगे, बिकॉज अमिलोब्लास्टोमा विच इज एन मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर आल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल रिमेनेंट. सो इट लुक्स समवॉट लाइक और रिजेंबल्स लाइक अमिलोब्लास्टोमा, बट हिस्टोलॉजिकली अगर अपन देखें तो द कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट कंटेन्स घोस्ट सेल्स. व्हाट इट कंटेन्स? घोस्ट सेल्स. एंड अगर रेडियोलॉजिकली अगर अपन देखें तो इट कंटेन्स स्फेरिकल कैल्सिफिकेशंस, गोल गोल कैल्सिफिकेशंस दिखेंगे अपने को रेडियोग्राफ में. सो इन टोटल कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सिस्ट, दो अदर नेम्स गॉर्लिन सिस्ट एंड सिस्टिक केराटिनाइजिंग ट्यूमर. फ्रॉम वेयर इट इज डिराइव्ड? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल रिमेनेंट्स. नाउ द ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल रिमेनेंट्स रिजेंबल्स एमिलोब्लास्टोमा. किसको रिजेंबल करेगा? अमिलोब्लास्टोमा. बट the calcifying or COC contains ghost cells or spherical calcification. Please keep in mind कि ghost cells जो है that is an histological feature and spherical calcification is an radiological feature. Now as I said that this term, which term? Calcifying epithelial odontogenic cyst, it shows heterogeneous group of lesions that exhibit a variety of पैथोलॉजिक, मतलब क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली वो वेराइटी ऑफ फीचर्स दिखाता है और बिहेवियरल फीचर्स भी उसके अलग अलग टाइप्स के रहेंगे. सो इन टोटल इट इज एन हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लीजन. कोई भी एक होमोजीनियस लीजन नहीं है कि एक बार हुआ तो वैसा ही हर बार हो रहा है. एवरी टाइम इट हैज सम न्यू क्लिनिकोपैथोलॉजिक साइन और न्यू बिहेवियरल फीचर्स. तो दिस टर्म शोज हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लीजन, मतलब बहुत सारे लीजन्स मिलके एक टर्म बना रहे हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं अलग अलग क्लिनिकोपैथोलॉजिक और बिहेवियरल फीचर्स. सो दिस टर्म COC इंक्लूड्स बोथ नॉन नियोप्लास्टिक सिस्ट. नॉन नियोप्लास्टिक मतलब कोई भी ट्यूमर के साइन नहीं देंगे, इट विल जस्ट बी ए सिंपल सिस्ट, या तो वो सीधा एक ट्रू नियोप्लाज्म जैसे भी अपने को एग्जिबिट कर सकता है. सो नाउ इट हैज बिकम ऑब्वियस दैट दिस इज नॉट वन लीजन बट इट इज टू. ये दो लीजन है, या तो ये एक सिस्टिक लीजन भी हो सकता है या तो ट्रू नियोप्लाज्म भी हो सकता है. तो इन टोटल कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, दो नेम है उसके, गॉर्लिन सिस्ट और सिस्टिक केराटिनाइजिंग ट्यूमर. डिराइव कहां से हुआ है? ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल रेमिनेंट्स में से, जो अमिलोब्लास्टोमा को रिजेंबल करेगा. उसमें हिस्टोलॉजिकली घोस्ट सेल्स, रेडियोलॉजिकली स्फेरिकल कैल्सिफिकेशंस. दिस टर्म COC includes both non-neoplastic and true neoplasm. So now it has become obvious कि ये कोई भी एक लीजन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लीजन से जो एक सिंगल एंटिटी बना रहे हैं. या तो वो सिस्ट भी हो सकता है या तो वो ट्रू नियोप्लाज्म भी हो सकता है. नेक्स्ट वी आर गोना सी द क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ COC. Okay, so next we are going to discuss about the clinical features of calcifying epithelial odontogenic cyst. But as we see, there is nothing much to discuss about the clinical features of CEOC. Then also, as it is the part of curriculum, we need to get through it once. So first we'll see the three most common points related to the clinical features, that is the most common age, most common sex and the most common site. So first we need to keep in mind that there is no the common age or no common sex related to कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट. मतलब इसकी कोई कॉमन एज नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इस डिकेड ऑफ लाइफ में या इस एज में होता है, या ऐसी कोई कॉमन
सेक्स भी नहीं है कि या मेल्स में ही कॉमनली दिखता है या फीमेल्स में. इट कैन अकर एट एनी एज एंड देयर इज नो सेक्स प्रिडिलेक्शन. सी नाउ रिगार्डिंग द साइट ऑफ अकरेंस वी हैव the most common site which is a maxilla and the second most common site which is the gingiva. So first is the bone or the cystic lesion will involve the bone and the second most common site being the soft tissue. So it can occur in the form of a peripheral lesion. पहले कहाँ होगा? First and the foremost is the maxilla और second most common site जो होगी वो क्या होगी? अपनी gingiva. Gingiva में वो होगा peripheral lesion के form में. Now there are also some common clinical signs which we have been coming across from past 3 to 4 topics, that is like pain, swelling, resorption of bone, displacement of teeth and resorption of adjacent root of the teeth. So these are the common clinical features or clinical signs which each and every pathology is presenting, as we have learned by now. And in the further lecture also you are going to come across this clinical findings. On rare occasions क्या होगा कि it may also present as peripheral lesion. जैसे मैंने आपको बताया कि second most common site क्या है उसकी? gingiva. CEOC की second most common site gingiva है, तो rare occasions में वो as a form of peripheral lesions में अकर हो सकता है. कहाँ? gingiva में. अब इसका जो नियोप्लास्टिक वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि या तो ये ट्रू सिस्ट रहेगा या तो ये नियोप्लास्टिक ट्रू नियोप्लाज्म रहेगा. तो इसका जो नियोप्लाज्म है उसका नाम दिया है डेंटिनोजेनिक गोस्ट सेल ट्यूमर. व्हाट है इसका नाम? क्या है? डेंटिनोजेनिक गोस्ट सेल ट्यूमर. सो दिस लीजन में ऑल्सो अकर इन बोन एंड जिंजाइवा. सेम वे जैसे ये मैक्सिला और जिंजाइवा में हो रहा था, वैसे ये लीजन बोन या जिंजाइवा में होगा. सो लेट्स सम अप क्विकली द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीईओसी. दैट इज द नो कॉमन एज, नो कॉमन सेक्स. और इस साइट में ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिला इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कॉमन साइन, जिंजाइवा अपनी सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है. जो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स आप देखते आ रहे हैं वो आपको पता है कि पेन, स्वेलिंग, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूट ऑफ द टीथ, या उसका रिजॉर्प्शन भी हो सकता है. रेयर ओकेजन्स में ये पेरिफेरल लीजन के फॉर्म में जिंजाइवा में होगा. और इसका जो नियोप्लास्टिक वेरिएंट है उसका नाम आपको याद रखना है. इट इज डेंटिनोजेनिक गोस्ट सेल ट्यूमर. ये भी बोन में भी हो सकता है और जिंजाइवा में हो सकता है. नाउ नेक्स्ट is the important part of this topic, that is the radiographic and the histologic features which has some peculiar characteristic regarding to the cyst. So next we are moving on to the radiographic and histologic features of calcifying epithelial odontogenic cyst. Okay, so now as we are going to discuss about the radiographic features of calcifying epithelial odontogenic cyst. So the calcifying epithelial odontogenic cyst may represent as unilocular or multilocular radiolucency. तो radiolucency कैसी लगेगी? या तो एक सिंगल लॉक्यूल देखने को मिलेगा या तो एक को बहुत सारे छोटे छोटे लॉक्यूल्स देखने को मिलेंगे. मतलब दैट विल बी या तो यूनिलॉक्यूलर और multilocular radiolucencies with discrete well demarcated margins. जैसे अभी तक अपन ने जो भी डिजीजेस देखी उसमें अपन ने देखा था कि एक रेडियोलुसेंसी है, उसकी एक वेल डिफाइंड मार्जिन रहेगी. तो उसी हिसाब से इवन द कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट will also have a unilocular or multilocular radiolucency with discrete well defined या well demarcated मार्जिन्स. अब इन रेडियोलुसेंसी के अंदर आपको क्या दिखेगा वो आपको याद रखना है कि विद इन द रेडियोलुसेंसीज देयर मे बी स्कैटर्ड और इर्रेगुलर साइज्ड कैल्सिफिकेशंस. क्या रहेंगे? जो छोटे छोटे कैल्सिफिकेशंस, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में बताया था कि इट विल कंटेन सम स्फेरिकल calcifications. So this is the same thing, that within the radiolucences there will be scattered or irregular sized calcifications, and these opacities, जो भी calcifications है वो आपको radio opaque दिखेगा, ना कि radiolucent. So these opacities may produce salt and pepper appearance. So again we'll recollect the point that within the radiolucences there may be scattered irregular sized calcifications, and these opacities may produce salt and pepper appearance. This is the point which you guys need to remember कि कौन सी रेडियोलुसेंसी या किस टाइप की रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी. दैट विल बी
salt and pepper appearance with diffuse distribution. कहीं एक जगह concentrated नहीं रहेगी, diffusely scattered रहेगी ये radio opacities. Sometimes क्या होगा कि these calcifications may develop so severe that it becomes quite difficult to demarcate the margins of लीजन्स. कि कभी कभी ये रेडियोलुसेंसी इतनी डिफ्यूज या इतनी सीवियर हो जाती है कि आप जो लीजन की मार्जिन है, जो ये वेल डिमार्केटेड मार्जिन की अपन बात कर रहे थे, वो डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियोग्राफिक फीचर्स. द ओनली थिंग विच यू गाइज नीड टू कीप इन माइंड इज अबाउट द सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस और diffuse distributed calcifications या spherical calcifications as we have seen in the introduction. Now the next feature or the next we are going to learn about the histologic features of CEOC. Okay, so next we have come to the histologic features of CEOC. So as you all are aware about the histologic features, every cyst has a lining, has a lumen and some other type of epithelium and some of the peculiar characteristics. So here we'll start with the lining epithelium. The lining epithelium contains ameloblast like basal cells. The cells which you can see over here in the lining epithelium are ameloblast like basal cells. The same type of cells we have also seen in odontogenic keratocyst with the same pattern of arrangement, that is a columnar palisaded arrangement with a hyperchromatic nuclei. You already know what is the meaning of hyperchromatic nuclei. The nucleus shifts to the opposite end of the cell. Next we'll move on to the cells of the lining epithelium. We have 5 to 10 cell layer thick. Now the cells over here are stellate reticulum type. Which type of cells we have? These are stellate reticulum type cells or spinous cells. You can also call it as star shaped cells. So two things we have seen right now. First the ameloblast like basal cells and next the stellate reticulum like cells which have a lining of 5 to 10 cell layer thick. Now in between this stellate reticulum like cells we have two things present. First is the ghost cells and second is the calcifications. So first we'll talk about ghost cells. What are ghost cells? Ghost cells are the degenerated epithelial cells. Whatever the epithelial cells, यहाँ भी जो epithelial cells present है उनका अगर degeneration हो जाएगा तो वो convert हो जाएंगे ghost cells में और आपको एक ऐसा eosinophilic mass दिखेगा. The red one which I have drawn are the ghost cells. So they are the degenerated epithelial cells that appear ovoid. These are ovoid in shape, they are eosinophilic and showing different stages of degeneration. अब हर सेल जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेज ऑफ डिजनरेशन में हो, इसका कोई दूसरा स्टेज चल रहा है, इसका कोई अलग सा, इसका कोई अलग सा. तो इन टोटल गोस्ट सेल्स आर द डीजनरेटेड एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर ओवॉइड एंड eosinophilic showing different stages of degeneration. Now secondly we are going to talk about the calcifications. तो calcifications क्या रहेंगे कि these are seen in relation to the ghost cells, seen as dystrophic deposits. Dystrophic deposits is meaning कि कोई भी अगर टिश्यू या सेल उसका डेथ हुआ है तो डेड टिश्यू का जो भी डेपोजिट रहेगा उसको आप कहोगे dystrophic deposits in relation to the ghost cells. So this calcification, the blue ones which you can see are the calcifications which are in relation to the ghost cells. These are called the dystrophic deposits. Now we have seen in total 4 things: the basal layer which contains ameloblast like basal cells with palisaded arrangement and hyperchromatic nuclei. Secondly, the lining epithelium contains 5 to 10 cell layer thick star shaped stellate reticulum like spinous cells. In between these cells, the loosely arranged stellate reticulum cells के बीच में क्या होगा? ghost cells और calcifications present होंगे. तो इन calcifications और ghost cells की क्या बात है कि these ghost cells are the degenerated epithelial cells that appear ovoid and they are eosinophilic, and the calcifications क्या है कि these are seen as dystrophic deposits in relation to the ghost cells. Above we have the cystic lumen which contains the cystic fluid and the keratinized material. Now we'll go below the lining epithelium. So first of all we'll see the connective tissue. The connective tissue is a bit scanty, doesn't contain much of the
cellular characteristics. The one thing which we are left to discuss is the dentinoid. We can see eosinophilic mass present beneath the lining epithelium in the part of connective tissue, not in the cellular epithelium. So the dentinoid is a result of inductive changes in connective tissue. कोई भी चीज का इंडक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज बन रही है, किसमें बन रही है? कनेक्टिव टिश्यू में. कौन से पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? द पार्ट विच इज एडजेसेंट टू द लाइनिंग एपिथेलियम. लाइनिंग एपिथेलियम के एडजेसेंट जो पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें अगर कोई इंडक्टिव चेंजेस होंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इओसिनोफिलिक मास, जिसको अपन कहेंगे डेंटिनॉइड. सो इन टोटल वी हैव 5 to 6 थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग CEOC. First of all, you need to know the lining epithelium, ameloblast-like cells, sterate reticulum-like lining cells, those cells, calcifications. above ऊपर अपना cystic lumen आ जाएगा, नीचे dentinoid and connective tissue which is a bit scanty. So this is all about the histologic features of calcifying epithelial odontogenic cyst. The most important feature which we need to keep in mind is the ghost cells, calcification, palisaded arrangement and stellate reticulum like cells, and lastly the dentinoid matrix. Okay, so now only thing which we are left is with the treatment and differential diagnosis of calcifying epithelial odontogenic cysts. So first of all we'll discuss the treatment, which is quite similar to the each and every cyst we have discussed till now, that is surgical enucleation. So आपको हर एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर cyst रहा तो उसकी epithelial lining रहेगी, तो आपको पूरी epithelial lining enucleate करना पड़ेगी ताकि उसके कोई भी remnants नहीं रहे और recurrence होने के chances कम रहे. नेक्स्ट अगर अपन बात करें differential diagnosis of calcifying epithelial odontogenic cysts, so there are 5. These differential diagnoses have some features that are coinciding or correlating with CEOC, that is our calcifying epithelial odontogenic cyst. So first of all is the dentigerous cyst, second one is the odontogenic keratocyst, third one is ameloblastoma, fourth one is adenomatoid odontogenic tumor, and the fifth one is ameloblastic fibro-odontoma. So this is all about treatment, differential diagnosis and overall calcifying epithelial odontogenic cyst. So as I know, we have covered almost 4 of the most common cysts which we are learning in our undergraduate life. Now अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. कोई भी अगर लेक्चर्स में आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाकी आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.